हाय एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कैसे एक एआई टूल को प्रॉम्प्ट दिया जाए और वो कैसे इफ़ेक्टिवली जो आप चाहते हैं वो करके दे आपको। ओके, सो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बहुत इजी है कि एआई को आप जो कराना चाहते हैं वो दो और इट विल जनरेट व्हाट यू वांट। सो दैट इज़ नॉट ट्रूथ। सो व्हाट हैपन, अगर आपको कुछ जनरेट कराना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक थिंग्स उस ही देना होगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, उसके अंदर कैसे एक एआई प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाहिए, कैसे क्रिएट करके एआई को देना चाहिए, उसके स्टेप्स थे। तो बेसिकली उसमें 5 स्टेप थे। 1 इज़ रोल, ऑब्जेक्टिव, कंटेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन एंड नोट्स। अगर आपको कुछ भी इफ़ेक्टिवली जनरेट कराना है एआई टूल से, आपको ये 5 स्टेप मस्ट भी फॉलो करनी होगी। 5th स्टेप नोट्स, इट कुड बी इग्नोर बट एटलीस्ट गिव 4 स्टेप्स। ओके, सो हम क्या करते हैं कि आज एग्जांपल्स कुछ क्लियर करते हैं, इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। सो व्हाट यू वांट, लेट्स सी। एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, राइट। सो लॉगिन फॉर्म के लिए जस्ट मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट ए लॉगिन फॉर्म। ओके, सो चैट जीपीटी it will take this instruction and start working on that. Let's see what it will create. ओके, तो अभी इसने देखो किस तरह का लॉगिन फॉर्म जनरेट किया है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर लॉगिन फॉर्म किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाना था, जिसमें मुझे कुछ डिज़ाइंस चाहिए थी। ओके, तो एक कंप्लीट पेज चाहिए था, उसका कुछ डोमेन होगा आपके पास कि वेबसाइट किससे रिलेटेड है, एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, उसको स्पेसिफाई करना होगा। ओके, सो अगेन वी विल मॉडिफाई दिस प्रॉम्प्ट एंड वी विल गिव द this prompt using all steps. Okay, so first step the role. Okay, so role, basically you have to define what is AI role for your task. So I'll define you are an expert designer who has 15 years of experience into the same field. ओके, सो बेसिकली हमने डिफाइन किया कि एक्चुअली में एआई कैसे ट्रीट करेगा वाइल जनरेटिंग दिस फॉर्म। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव इज दैट वी नीड टू क्रिएट ए लॉगिन फॉर्म, राइट। क्रिएट ए लॉगिन फॉर्म, ओके, फॉर माय application. Okay, so instead of application we can use website. Okay, this will be objective. Context. So context, basically what is use of this login form for your website. So once perform this task, what will be meaning for you. So this login form will be using by client who will submit feedback of my services if services okay, let's change something. We can give some more context. Client who will submit feedback for my services. Suppose instead of my services we can give the clear context of stitched garments services. Basically I am running a fashion designing folio
portfolio. I am, instead of running, I have fashion designing portfolio where need this login form. Okay, if this login form is not attractive, then there can be bad impression on customers. If it would be more elegant, then will attract and next time or future. Okay, we can give some instruction like include garment or fashions related images, can be in background or in icons. Okay, so last step is we need to define the node. Okay, so node basically actually what we want from so the best nodes, actually we need to give some nodes to AI. This is the node which you should look into this. Okay, so I can say colors combination would be multiples. Okay, so see, we define the AI role. Okay, this is the objective, what we want to do from AI, this login form. So this is the context. Okay, then instruction, and finally हमने दिया colors combination which is as a nodes. Let's try again. Now you can see creating image elegant login form with saving element. Okay, या आपने देखा कैसे इसने पहले कैसे जनरेट किया था on basic prompt, and if we give this detailed using this structure like role, objective, context, instruction and node, it has generated very attractive login form for the particular context. So this what I can say, like if you want to generate anything or you want to do any task, then give the prompt in this way, it will be very effective. अब क्वेश्चन आएगा कि डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करेंगे इसको. सो यहाँ पर मैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि इस फॉर्म को लेट जनरेट React.js कोड फॉर दिस लॉगिन फॉर्म. ओके, लेट्स सी व्हाट इट विल जनरेट. सो इसने बेसिक कोड जनरेट किया है रिएक्ट का, जैसे कि एक कंपोनेंट कोड बनाया है कंप्लीट. ओके, सो यहाँ पर कुछ भी आइडेंटिफाई करें तो काफ़ी हार्ड है कि कुछ भी आपको एनहेंस करना है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई एनीथिंग. ओके, इन सिंगल पेज इट हैज़ डन एवरीथिंग. ओके, लेट मॉडिफाई दिस using the all steps which we did for this image. Like I mentioned, you have 15 years of experience in React.js development and having good practice of clean code. Let's develop this login form in React.js. Agenda of this to keep code clean and scalable future. If there is no principle follow, then it will be hard to support escalation in future. Follow SRP and clean code concept. Components should be clean. अगर आप देखते हो तो इसने completely फॉलो किया है कि व्हाट एक्चुअली वी वांट. इवन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है. देयर विल बी सोर्स कंपोनेंट यूआई, देयर विल बी कॉमन कंपोनेंट्स, देयर विल बी auth folder, then component files. Okay, hooks will be there, services will be there, styles will be separate, and our login page will be separate. Now we can see input field, we have this is the very clean. Okay, buttons are the separate. Okay, so earlier everything done in single page, now this is done in a different component.
now we can see the main login form. It is easy, like this is the input field, email address, password. Okay, this is the checkbox, okay, button, and this we have. So if include in login page, there will be single component login form. Styling we can see. Okay, so this is everything what we want according to our requirement. Okay, जो भी एक्टिविटी की है उससे अगर आपको हेल्प मिलती है आपके डेवलपमेंट में, प्लीज़ कमेंट एंड let me know what we can do more which can help in your task. Thank you.